गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर 5 है उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोक्स लॉ। और विस्कोसिटी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन क्या होता है विस्कोसिटी का, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ। विस्कोसिटी क्या कहलाता है? जब भी दो फ्लूइड्स के दो लेयर्स या दो ये मूविंग लेयर्स या फ्लूइड के आपस में जो लेयर्स हैं उनके बीच जो एक अपोजिंग फोर्स लगता है, ये अपोजिंग फोर्स क्या करेगा? फ्लूइड के मोशन को अपोज करेगा। तो अपोजिंग फोर्स जो फ्लूइड के मोशन को अपोज करता है, दिस फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। ठीक है। और दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। विस्कस फोर्स क्या हुआ? एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स हुआ जो दो लेयर्स के बीच लगेगा और उसके मोशन को अपोज करेगा। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है। कोई फ्लूइड ज़्यादा विस्कस हो सकता है, कोई फ्लूइड कम विस्कस होता है। जैसे हम वाटर और ऑयल के कंपैरिजन में लें, वाटर इज लेस विस्कस देन ऑयल। वाटर इजीली फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लेयर्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम है, वाइल ऑयल इज लेस विस्कस, मोर विस्कस देन वाटर, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा देर से फ्लो होता है। ठीक है। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है? विस्कोसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोक्स लॉ। ध्यान से इसको देखेंगे। स्टोक्स लॉ क्या है? मैं स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूं। इफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r, if a small sphere of radius small r, if a small sphere of radius small r is moving with a velocity, is moving with a velocity v, is moving with a velocity v through a homogeneous stationary medium, through a homogeneous stationary medium, through a homogeneous stationary medium, liquid or gas, liquid or gas, liquid or gas, liquid or gas of viscosity eta, of viscosity eta, इसको बोलते हैं eta, then the viscous force acting on the sphere, 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 then the viscous force acting on the sphere is F viscous 6 pi eta r v, where eta is coefficient of viscosity, r is radius of the sphere, and v is velocity. v is velocity of the sphere. हम यहाँ से भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ऑफ eta is equals to F by 6 pi RV. So force ml t minus 2 r, this is L, and velocity LT minus 1. L cancel, this become L minus 1 t minus 1. This is the coefficient of डायमेंशन। ठीक है। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ डायमेंशन हुआ और ये स्टोक्स लॉ कहलाया। स्टोक्स लॉ क्या है कि अगर हम एक स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस r है इज मूविंग विथ ए
वेलोसिटी v थ्रू ए होमोजेनियस स्टेशनरी मीडियम, मतलब वो स्फीयर उस होमोजेनियस स्टेशनरी मीडियम में मूव कर रहा है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज नोन एज 6 पाई ईटा आरवी, और यही हमारा क्या कहलाता है, स्टोक्स लॉ। दिस फोर्स इज नोन एज स्टोक्स लॉ, राइट। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, देन आफ्टर दिस वी विल स्टडी टर्मिनल वेलोसिटी। नोट करिए इसको। नोट करिए फास्ट इसको। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। And this is terminal velocity. पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, जब भी किसी स्फीयर या किसी आर रेडियस के स्फीयर या बॉल को हम किसी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, तो वो जिस वेलोसिटी से उस पर कितने फोर्स एक्ट होते हैं, एक तो वेट के कारण डाउनवर्ड वेट उसका एक्ट हो रहा है, एक उस पर जो फ्लूइड है वो अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा, उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, और उसके बाद स्टोक्स लॉ के वजह से जो फोर्स लगेगा, स्टोक्स लॉ की वजह से भी तो एक फोर्स लग रहा होगा जो अभी हम लोग इससे पहले देखें। तो ये सारे फोर्स जब हम इक्विलिब्रियम में कंडीशन कर लेंगे और इक्विलिब्रियम में उस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम पहले डिफाइन करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। लिखेंगे इसको, when a solid sphere, when a solid sphere of radius, when a solid sphere falls in a liquid, falls in a liquid, falls in a liquid, its accelerating velocity is controlled, its accelerating velocity is controlled by the viscous force, due to liquid and hence it attains a constant velocity, and hence it attains a constant velocity. It attains a constant velocity which is known as terminal velocity, which is called terminal
वेलोसिटी। ठीक है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स इन अ लिक्विड इट्स एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी इज बाय द विस्कस फोर्स। एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी किसकी वजह से? विस्कस फोर्स ड्यू टू लिक्विड एंड हेंस इट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर रहा है। किसकी वजह से? विस्कस फोर्स की वजह से वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर रहा है। और यही वेलोसिटी हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले एक स्फीयर देखते हैं और इस पे जो फोर्स लग रहा होता है, मान लीजिए ये फ्लूइड्स हैं, ये फ्लूइड्स हैं और इस पे जो फोर्स लग रहा है हम इसको निकालते हैं। The density of this is rho and density of this fluid is sigma. इस पे जो वेट इसका लग रहा है, वेट दिस इज इक्वल्स टू mg, ये डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा, विस्कस फोर्स जो इसकी वजह से लग रहा है दिस इज 6 पाई ईटा आरवी, और इस पे एक अपथ्रस्ट लग रहा है, दिस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू, राइट, इस पे एक अपथ्रस्ट लग रहा है। तो हमारे पास इस स्फीयर पे, इसका रेडियस अगर r है तो हमारे पास इस स्फीयर पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम, net force on this sphere is 0. Net force on this sphere is 0, so we can say F thrust plus F viscous is equals to weight of a sphere. F thrust, this F thrust, ये कितना F thrust लगेगा? थ्रस्ट तो हम पे कौन लगा रहा है? ये फ्लूइड लगा रहा है, तो हम फ्लूइड जो लगाएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज रो, डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज रो। तो अब थ्रस्ट जो हम पे लग रहा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, और वेट ऑफ स्फीयर तो मास इंटू जी, सो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर बी इज इक्वल टू मास 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे अब ये डेंसिटी जी, अब यहाँ पे हम ये क्लियर कर लेंगे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड is equals to sigma, density of a sphere is equals to rho। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू सिग्मा एंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, तो हमने अपथ्रस्ट कौन लगाएगा? ये फ्लूइड लगाएगा, तो फ्लूइड उतना ही वॉल्यूम डिस्प्ले करेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बिकम्स मास, तो दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर बी, तो 6 पाई ईटा आर बी। वेट ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर इस फ्लूइड पे कितना वेट लगाएगा? मास इनटू ग्रेविटी। तो अब इस स्फीयर का मास होगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और मास के लिए हम किसका डेंसिटी यूज करेंगे? स्फीयर का डेंसिटी। यहाँ पे हम किसका डेंसिटी यूज किए? फ्लूइड का डेंसिटी थ्रस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि थ्रस्ट फ्लूइड लगा रहा है और वेट स्फीयर लगाएगा। क्लियर? अब यहाँ से जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू, हम उसको उधर लेते जाते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, जी कॉमन हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा। अब इसको कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा 9, आर से एक ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस वी टी इज इक्वल्स टू 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी rho minus sigma. This is the expression for terminal velocity. This is the expression for terminal velocity where eta जो है, where eta coefficient of viscosity, where eta coefficient of viscosity. ठीक है, नोट करिए इसको।
और भी टर्मिनोलॉजी जो है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये रो क्या है, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्फीयर, राइट, सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और भी कुछ बचा, आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। ये सारे टर्मिनोलॉजी को, दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, नोट करेंगे इसको। हो गया, बता दो, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफ, ग्राफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो ग्राफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो ग्राफ हमारा बनेगा, दिस इज vt और दिस इज टाइम ऑफ डिस्टेंस। What is the expression we will got? Vt is equal to 2/9 eta r square sigma minus rho into g, rho minus sigma into g. That this graph will be like this. ये एक समय के बाद जैसे जैसे टाइम हम प्रोसीड करेंगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, application of terminal velocity, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। पहला एप्लीकेशन है वेलोसिटी ऑफ रेड ड्रॉप्स इज वेरी स्मॉल, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स इज वेरी स्मॉल in comparison to the velocity, in comparison to the velocity, in comparison to the velocity which would have, which would have acquired by a body, acquired by a body falling freely from the height of cloud, falling freely from the height of clouds. दूसरा, descent of a parachute with moderate velocity, descent of a parachute with moderate velocity। तीसरा हम लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, determination of electronic
electronic charge in millican drop oil experiment. These are the application of terminal velocity. नोट करें, ये तीन हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी के एप्लीकेशन है. पहला एप्लीकेशन क्या है? रेन ड्रॉप्स इन वेरी स्मॉल in comparison to the velocity which have acquired by a body falling freely from the height of clouds. ठीक है, रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है. किसके कंपैरिजन है? जब वो क्लाउड से कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है. पैराशूट का नीचे आना विद अ मॉडरेट वेलोसिटी. अगेन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम लोग 12th क्लास में इसको स्टडी करते हैं, तो उससे हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को डिटरमाइन करते हैं. वहां भी टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं. नोट करेंगे इसको. Next, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है हम देखते हैं. द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न streamline, laminar, turbulent. Streamline, laminar, turbulent is determined by a non-dimensional number. Is determined by a non-dimensional number, is determined by a non-dimensional number called Reynolds number. Called Reynolds number. R E is equals to inertial force by viscous force. Rho V D by eta, where rho is density of fluid, rho is density of fluid having viscosity eta, theta, and flowing at a mean speed v. Flowing with a mean speed v. Here dt is the lateral dimension. Here d denotes the lateral dimension of the obstacle or boundary of the flow. Type of flow, is streamline or laminar.
streamline or laminar, Reynolds number is less than 1000. Turbulent. Reynolds number greater than 2000. Unsteady. दिस इज द रफली आइडिया. ये बॉटम वाला दिख नहीं रहा शायद, मैं उसको उधर लेफ्ट साइड में लिख दे रहा हूँ. बॉटम वाला ये दिख नहीं रहा है हमें. तो अनस्टेडी फ्लो, if Reynolds number is greater than 1000, less than 2000, this is unsteady flow. Unsteady. ठीक है. So streamline or laminar, Reynolds number less than 1000, turbulent, Reynolds number greater than 2000, और 1000 से 2000 के बीच में जो होगा that is known as unsteady flow. ठीक है, नोट करेंगे इसको. Reynolds number is a number which determines the type of flow. Which determines the type of flow. अगर 1000 से कम हुआ तो streamline, 1000 से ज़्यादा हुआ तो turbulent, और 1000 और 2000 के बीच का हुआ then it is unsteady flow. ये वैल्यू हमें याद रखना है. इस बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि whether it is streamline, laminar, turbulent और unsteady. ठीक है. नेक्स्ट, there is next point लिखेंगे. Upon increasing the speed of flow, upon increasing the speed of flow, gradually transition from laminar flow to turbulent flow. Laminar flow to turbulent flow. Laminar flow to turbulent flow takes place at a certain speed. Takes place at a certain speed, and this speed is called critical speed. This speed is called critical speed. For fluids, lower density and higher viscosity. Lower density and higher viscosity. With laminar flow is more proper. With laminar flow is more probable. Laminar flow is more probable. Dependence of viscosity. Next topic लिखेंगे. Dependence of viscosity. Viscosity किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, and the second thing on pressure of fluid.
लिक्विड नहीं लिखे, फ्लूइड ही लिख दीजिए, ज़्यादा कॉम ऑन प्रेशर ऑफ इसी में लिख लेंगे ऑन प्रेशर ऑफ फ्लूइड में viscosity is normally independent of pressure, however liquids under extreme pressure often undergo an increase in viscosity. Viscosity of gas is practically independent of pressure. नेक्स्ट है टॉपिक, और वो आज का लास्ट टॉपिक होगा ऑलमोस्ट। बताऊँ इसको, तो विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। जनरली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी चेंज होगा डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं। Next है Poisson's formula. Poisson's formula. इसी को बोलते हैं स्टेडी फ्लो इन कैपिलैरिटी। स्टेडी in case of steady flow of liquid, of viscosity in a capillary tube, of the pressure difference field across it. The volume of liquid flowing per second is given by the volume of liquid flowing per second is given by
by dq phi p 8 eta. This formula is known as volume flow rate, and with the help of this formula, we can calculate coefficient of viscosity. And this formula is known as Poiseuille's formula. ठीक है, तो पाई p प्रेशर हो गया, r रेडियस हो गया, eta और L is the length of tube. R is the radius here, coefficient of viscosity this is eta, pressure difference that is p, L is the length of tube. L is the length of this capillary tube. ठीक है, तो capillary tube में ये जो Poiseuille's formula है पाई p r pressure difference r to the power 4 by 8 eta L. This is known as Poiseuille's formula. और ये हमारा coefficient of viscosity निकालने में इस formula को हम यूज करते हैं, right? So this is all about viscosity, coefficient of viscosity, terminal velocity, Reynolds number, and Poiseuille's formula. And with the basis of Reynolds number, you can see about the type of flow, whether it is streamline or turbulent, right? चलिए, अब ये टेम्परेचर वाला एक जो लास्ट था उसको हम एक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी, viscosity dependence on temperature. Viscosity dependence on temperature. Since cohesive force decreases, with increase in temperature, viscosity of liquid decreases, with rise in temperature. Viscosity of liquid decreases with rise in temperature. दूसरा लिख लेंगे इसमें, viscosity of gases is the result of diffusion of gas molecule. Gas molecule from one moving layer to other. From one moving layer to other with an increase in temperature. Diffusion increases the rate of diffusion increases, consequently viscosity increases. Consequently viscosity increases. So viscosity of gases increases. So viscosity
of gases increases with rising temperature. Viscosity of gases increases with rising temperature. एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ. Viscosity dependence since cohesive force decreases with increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोहेसिव फोर्स अभी हम डिस्कस नहीं किए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँ. तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, मतलब विस्कोसिटी लिक्विड का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा. बट विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस. गैस में जो विस्कोसिटी है वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच डिफ्यूजन के कारण होता है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस, मतलब विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. दो कंक्लूजन होंगे. विस्कोसिटी लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटेगा, गैस के लिए विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ेगा. ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको. दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ लेक्चर. नाउ वी आर कंक्लूडिंग हियर, राइट. थैंक यू.